back to the class. In today's video, we will cover Unit 2 of Block 1 and the name of the unit is the Homeric Hero. So in this video, what we are going to learn is, let me show you the structure first. We'll talk about the objectives, हम क्या-क्या इसमें सीखेंगे. We'll talk about the introduction. We'll talk about Achilles. Then further, we will move ahead to the difference between Achilles and Hector, and then finally, on the basis of this point, you and I together, we will see that who is the hero of the Iliad. So let's get started. All you need to do is just focus on the video. So when we talk about the objectives, क्या क्या आप इस वीडियो से सीखेंगे, तो आप बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे कि जो दो इगोइस्टिकल लीडर्स हैं, इगोइस्टिकल मीन्स जो अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस को सबसे सुपीरियर रखते हैं, वो इगोइस्टिकल लीडर्स होते हैं. उनका एमर्जेंस एक्चुअलीज में as Homeric heroes. So now who are those two egoistical leaders? Agamemnon, the king of Mycenae, and Achilles, that's right, son of Thetis. Now then finally we will also compare and contrast the points between Achilles and Hector as the hero of the Iliad. So now let's get started. When we talk about the Iliad, you all know कि Iliad कैसे start हुई थी, किसका एब्डक्शन हुआ था. एब्डक्शन वर्ड यू अंडरस्टैंड, वी डिस्कस इट इन द लास्ट क्लास कि एब्डक्शन का मतलब होता है भगा के किसी को फोर्सफुली ले जाना. तो प्रिंस पैरिस जो हैं ट्रॉय के, वो किसे भगा कर ले आए थे? क्वीन को. किसकी क्वीन को ले आए थे? वो क्वीन को ले आए थे क्वीन हेलेन को. और वो किनकी बीवी थी? वो बीवी थी exactly, so she was the wife of Menelaus. Okay, and now Menelaus felt so insulted कि ये तो बहुत गलत हो गया है. Now let's get her back. So अब उन्होंने अपने ब्रदर को बोला, एगमेमनन को, जो किंग ऑफ माइसिनी है, कि let's get Helen back and let's order a war against the Trojans. So now when we focus ahead, so what happened? So Iliad is written in 24 books. We all know that, we have discussed this point. So who was responsible for Hector's death? Achilles was responsible for Hector's death. And then we observed in the Iliad कि कैसे जो Iliad है वो basically दो चीजों से related है. एक तो Homeric valor से, और secondly वो base रूट क्या है उसका, कि जो ईगोइस्टिकल लीडर्स थे, क्लैश था एक्चलीज और एगमेमनन का. अब इन दोनों के बीच में क्लैश क्यों आया था? बिकॉज एगमेमनन जो है वो हायर हायरार्की पोजीशन में हाई थे, एक्चलीज से वो ऊपर की पोजीशन में थे. तो अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन उसे लगा कि मैं इसकी वॉर बूटी को ले सकता हूँ. अब जब उन्होंने वॉर बूटी को जीत लिया था 10 साल की वॉर के बाद, 9 साल की वॉर के बाद, एक्चुअली 9 साल बाद उन्होंने जो है एरिया को कैप्चर किया, वहां से उन्होंने वॉर बूटीज को ले लिया, क्राइसियस एंड ब्राइसियस. नाउ अब क्राइसियस को तो रिटर्न करना पड़ा क्योंकि उनके फादर ने अपोलो गॉड से कनेक्शन कर लिया था कि प्लीज कोई प्लाग भेजो और इनकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दो. तो जब बहुत ज्यादा लॉस होने लगा, so then Agamemnon understood that my war booty is the reason behind this plague. Now let's get her restored. He restored her back, and now he claimed Achilles' war booty, who was Briseis. अब आपसे कोई आपकी फेवरेट चीज मांग ले, बहुत गुस्सा आएगा ना. Similarly, Achilles was very close to Briseis and उसकी एकदम ईगो हर्ट हो गई कि मैं अपनी वॉर बूटी को नहीं दे सकता. लेकिन जब हम एगमेमनन की बात करें तो उसकी सुपीरियर पोजीशन थी, उसे लगा ये तो एकदम जस्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है. बट व्हेन वी सी इन द फ्लैश लाइट इन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ Achilles, so we understand कि उसकी एकदम ego hurt हुई थी. So this was very wrong. He felt insulted, humiliated, and then he decided finally कि I won't be fighting for the Greeks. And then he further prays to his mother Thetis कि Greeks को हराओ और ये वो. Then the myth goes on and the war goes on, and then finally it leads to death of Patroclus, who was very close to Achilles. That's right. And then finally we see how Achilles, out of rage, personal rage, not country's rage, he had no feelings for country and he didn't fight it for country, he fight it for his own personal values. And then when he fighted, he lost. And then when he fighted, तो किसका loss हो गया था?
ट्रॉय सिटी का। कैसे लॉस हो गया? क्योंकि जो सेम पेन हेक्टर की डेथ पे प्रायम को होता है और जो ट्रोजन्स को होता है, वही सेम पेन जो है एक्िलीज भी सफर किया था। एक्िलीज हैज बीन थ्रू दैट पेन व्हेन पेट्रोक्लस हिज क्लोज फ्रेंड डाइड। So Achilles then felt insulted and he denied his prize slave, and then when he denied his prize slave, तो उन्होंने वॉर नहीं की। फिर हेक्टर की डेथ हुई। हेक्टर की डेथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? Achilles. So now when we move ahead, we learn about Achilles. अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा एक्िलीज के बारे में। सो व्हाट यू हैव टू डू इज पे लिटिल अटेंशन हियर टू छोटे छोटे पॉइंट्स। अब एक्िलीज कौन है? हीरो है इलियड का। And then we talk further about him. He's a warrior, fighter, full of rage and anger. And unlike Hector, we see he didn't fight it for his, country or for his people. When we see when we talk about Hector, he fight it for his people. But when we talk in terms of Achilles, he had his personal rage. कि मेरे फ्रेंड को मारा है इसलिए मैं बदला लेने जा रहा हूँ। तब फिर उन्होंने कुछ नहीं देखा, सबको तोड़ फोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा। और जब उनसे कुछ लोग रिक्वेस्ट भी किया किसी ने वहां से कि मुझे छोड़ दो, तो उसने बोला मरना तो पड़ेगा, अब यू विल हैव टू डाई, यू डोंट हैव एनी पॉइंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट Achilles, he was a warrior hero, he was full of rage, anger, and then we see two major flaws. अच्छा तो वो था फाइटिंग में, देखो इतना अच्छा था कि एगमेमनन खुद किंग ऑफ माइसिनी होने के बाद भी वो एक्िलीज पे डिपेंड थे, उसके हीरोइक वैलर पे डिपेंड थे कि ये फाइट करेगा तो हम जीतेंगे। ये बात सबको पता थी, एगमेमनन को भी पता थी, एक्िलीज को भी पता थी। लेकिन स्टिल वी सी कुछ फ्लॉज थे एक्िलीज में। और वो क्या फ्लॉज थे? दैट आर मेंशन क्लियरली ऑन द पॉइंट नंबर 1 and 2। कि एक तो उन्होंने जो रिवेंज लिया एगमेमनन पे फाइट ना करके, उससे ग्रीक आर्मी का बहुत ज्यादा लॉस हो गया। एंड देन फाइनली व्हाट ही डिड, उन्होंने प्रे किया अपने ही कंट्रीमैन की डिफीट पे। वो क्यों किया? क्योंकि नाराज थे, very angry, very sad, dejected, because Agamemnon, being the superior leader, asked for his prize booty, and he felt humiliated, insulted, and that is why to his mother Thetis he prayed that ki, you take help of Zeus or whosoever, and you defeat my own countrymen, the Greeks. So this led to huge destruction, and finally, after the death of Patroclus, Achilles took a step for his friend, and that too was not for the countrymen, that too was because he felt the connection with his friend, the loss of his friend. Then out of rage he fighted with the Trojans, and then फिर उन्होंने ऐसी फाइट की कि किसी को नहीं छोड़ा। endless deaths were there when Achilles was fighting। आप पिक्चर में देख सकते हो heroic valor उनका। एंड ये जो है बहुत ही merciless warrior थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कितने ज्यादा जो है आपके ट्रोजन्स गिर रहे थे, मर रहे थे। he didn't notice then। बस उसके बाद तो उन्होंने हेक्टर को लिया, बांधा अपने शरीर से, और उन्होंने इधर और उधर राउंड्स लगाए, एंड he kept on moving until he died. And finally he realized that it is not, he felt the connection when Priam requested to him that please feel if your father would have been here, so what would have happened? Then finally he realized कि अगर मेरी जगह हेक्टर की जगह मैं होता और मेरे फादर जो है रिक्वेस्ट कर रहे होते, तो उन्होंने एक्िलीज ने उस पेन से कनेक्ट किया, एंड देन फाइनली ही रिटर्न द बॉडी बैक, एंड देन उन्होंने प्रायम को ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए उनको या फूड पर ऑर्डर किया, उन्होंने उन्हें मील पर इनवाइट किया टू रिस्पेक्ट हिम। नाउ वी सी कि उनमें क्या क्या पॉइंट्स है, यू कैन नोट इट फ्रॉम हियर। he revenged the killing of Patroclus. He was a warrior and fighter, son of Thetis. Thetis is Greek mythological god. And then he's hero of Iliad. Finally we see, देखो आपका लास्ट पॉइंट यहीं से क्लियर हो गया, that he is the hero of the Iliad. And then he is relentless, merciless warrior. He's full of rage, anxiety, and rage characterizes his every action. This is to be pointed. Okay, and then we move ahead. When we move ahead, अच्छा आप लोग एक्िलीज के कैरेक्टर को और भी ज्यादा अच्छे से समझोगे जब आप इसको इन कंपैरिजन टू हेक्टर पढ़ोगे। सो नाउ लेट्स गेट अहेड। सो ही इज वेरी अनकंसर्न्ड अबाउट ओबेइंग रूल्स। देखो जब उसे एगमेमनन बोलता है कि चलो फाइट करो, he denied
he seriously denied कि नहीं मैं नहीं फाइट करूंगा क्योंकि मुझे तो ह्यूमिलेटेड फील हो रहा है. I have been insulted by you. So he kept quiet and he ordered Patroclus, you go and you fight with the Trojans. And he doesn't fight for his countrymen, even though he was from the Greek army side. So there were two armies. One was Trojan army. Second one was fight किसके बीच में हो रही थी? Trojan army and the Greek army. We call the Greek army Achilles and the Trojans. Okay, Troy city के warriors को हम Trojans बोल रहे थे, जहां से हेक्टर और पैरिस और ये सब प्राइम फाइट कर रहे थे. एंड इधर ग्रीक वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? Athenians. Okay, so जब हम देखते हैं कि he was not fighting for his own reasons, who was not fighting for his own reasons? Hector was not fighting for his own reason. He was fighting for the country, for his people. And when we see it in the case of Achilles, so we observe कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी कंट्रीमैन के लिए, या उसको कोई ऐसे नहीं था कि मैं किसी के साथ हूँ तो मुझे, उसके पर्सनल रीजंस थे. एंड व्हाट वाज द पर्सनल रीजन? द डेथ ऑफ पेट्रोक्लस, द क्लोजेस्ट फ्रेंड. पेट्रोक्लस की डेथ के बाद उसे रियलाइज हुआ कि अब मुझे बदला लेना है. देन मर्सीलेसली ही किल्ड एंडलेस ट्रोजन्स. धाड़ धाड़ धाड़. फिर तो बस डेथ्स गिनी गई और कुछ नहीं गिना गया. सो काला दिन सॉर्ट ऑफ. ओके, सो उसे एगमेमनन के लिए कोई रिगार्ड नहीं था. एक तो एगमेमनन ने उसे इंसल्टेड फील कराया. ठीक है, था भाई, आप हो हमसे सुपीरियर, बट यू कैन नॉट इंसल्ट मी लाइक दैट. ही जस्ट फेल्ट सो ह्यूमिलेटेड कि फिर तो उसने जो है वो 2 फ्लोर वाला एक्शन किया. एंड देन ही शोज प्राइड, वी आर रिफ्यूजिंग टू फाइट. अब जब उसे कैसे तरीका मिला अपनी प्राइड को, ऑनर को रिस्टोर करने का, या फिर सॉर्ट ऑफ रखने का, बैलेंस रखने का, कि मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं नाराज होके बच्चों की तरह बैठ जाऊंगा और मेरी तरफ से पेट्रोक्लस फाइट करेंगे. और अब पेट्रोक्लस को देखा जाए तो it was the reason because Achilles didn't fight, right? So now when we focus on the key characteristics of Achilles, he's full of rage, dignity, pride, reputation. All these key points characterizes Achilles. Okay, so we also see the quote like, "Rage, goddess, sing the rage of Pallas' son." Who is Pallas' son? We are talking about Achilles. Okay, Achilles, murderous, doom that caused the Achaean countless losses, hurling down to the house of death so many sturdy souls, great father's soul, but made their bodies carrion, peace for the dogs and birds, and the will of Zeus was moving towards its end. Okay, so हम इसमें भी कहीं ना कहीं Achilles के बारे में जानते हैं कि how he is characterizes. Okay, these are the very beginning lines of the poem, and you also get to know that his son was his father was Pallas and his mother was Thetis. Okay, so now let's move ahead. You can also quote these. This is one of the important quote and one of the beginning quote from the poem, and you get to see it under many themes. Even आपको theme भी इसी word से पता लग रहा है. First word is very clear in itself, and it is making the sense that it is the upcoming theme. It is foreshadowing the theme, rage. Okay, so rage goddess, and then it moves ahead. So you can note out this quote and you can always mention it in your answers. Dot dot karke you can mention out in your answers. It will have a good impact on your answer sheets. Now let's move ahead. When we talk about how Homer describes Achilles' sorrow, so you can see it in the picture. After the death, he was very sad. Who was very sad? Achilles was very sad. And whose death we are talking about? His closest friend, whom he was very close. Who's that? What is the name of that? Yeah, Patroclus. Okay, so you can always see in book 8, Homer जो है describe करते हैं Achilles का sorrow through these lines of the poem. A black cloud of grief came shrouding over Achilles. Okay, so he was very sad. Both hands crawling on the ground for soot. Soot होता है जो राख हो जाती है. Okay, and filth. He poured it over his head, fouled his handsome face, and black ashes settled onto his fresh, clean war shirt. Overpowered in all his powers, sprawled in dust, Achilles lay there, fallen, tearing his hair,
he filling it with his own hand. Okay, so you can see these lines, how they have catharsis. We'll discuss what is catharsis in upcoming units. So आप देखते हैं कि कैसे ये बहुत ही sad description है. So even in the picture you can relate कि उसकी friend के death के बाद वो कैसे जो है sad बैठा हुआ था, and he didn't had anything. He was just looking out of the राख को देख रहा था, अपने ऊपर डाल रहा था और अपने बाल को तोड़ रहा था, उसे मरोड़ रहा था. He was sitting very sadly. So what these lines of the poem tells you, that these lines yokes his emotion. It tells you directly about his emotion. Whose emotion we are talking about? Achilles. Okay. So then after the death of his friend, he brutally kills Hector. He attaches his body, Hector's body, to the chariot. रथ से attach करते हैं और फिर battlefield में drag करते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर. Okay. Now in the book 10, Achilles returned the body. So humility and fellow falling. किसकी? Loss of Patroclus. Okay, so this reflects कि फिर हेक्टर को जो है वो सेम पेन देते हैं कि मैंने तो उस पेन से अब सफर कर लिया, अब ट्रोजन सिटी की बारी है, प्राइम की बारी है, इन लोगों की बारी है कि ये लोग भी सेम पेन फील करें. Then when we move ahead, we talk about the result of Iliadic war. Okay, so क्या result हुआ? ये जो Iliad war है, 40 years war है, abduction की बात करती है. हालांकि abduction को इतना हाईलाइट में नहीं दिखाया हुआ, ये बेसिकली लास्ट 40 डेज या 6 वीक्स आप कह सकते हैं, उसकी बात करती है. तो इसका रिजल्ट क्या है? देखो, ऑन द फर्स्ट हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रीक आर्मी, पेट्रोक्लस डेथ. देखो बहुत सारी डेथ हुई थी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंट्रल पॉइंट, इट इज पेट्रोक्लस डेथ. ओके, इट कॉजेस पेन टू Achilles. Patroclus was a close friend to Achilles. Okay, and then Achilles felt hurt. अब आपको कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो या आपको बहुत कोई फैमिली रिलेटिव सॉर्ट ऑफ हो और वो चला जाए, तो वी फील वेरी पेनफुल. ओके, सिमिलर टू दैट causes Achilles. Okay, कि मैंने तो सेम पेन झेल लिया, अब इन लोगों की बारी है. Then it leads to Hector's death and it causes pain to Priam, the king of Trojan, and all the city of Trojans. And then who causes the similar pain? Hector himself causes the similar pain to Achilles. Okay, so Priam जो है वो क्या है, वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं Achilles से. वो बोलते हैं प्लीज इसकी बॉडी को रिटर्न कर दो, हम इसको एक रिस्पेक्टफुल फ्यूनरल देना चाहते हैं, लास्ट राइट इसकी परफॉर्म करना चाहते हैं कि ये बहुत हीरोइक तरीके से लड़ा. ओके, अब Achilles को लगता है कि अगर मेरी जगह हेक्टर बैठा होता और प्राइम की जगह पेलस बैठे होते तो कैसा लगता? बहुत बुरा लगता. तो वो इमोशनली फील करते हैं उस चीज से. ही ट्राइज टू कनेक्ट विद दैट एंड देन ही फील्स, ही रियलाइजेस द ह्यूमन ग्रीफ ओवर ह्यूमन लॉस. ओके, सो ही बोथ ऑफ देम, Achilles and Priam, feels कि human beings are just mere puppets at the hands of God, who plays them like we play with the random flies. We catch them, we do anything we want to do. Similarly, that is happening with us. So both recognizes the human identity. दोनों को समझ में आता है कि war is creating loss. हम लोगों को लड़ते हैं तो भी हमारा लॉस होता है, नहीं लड़ते हैं तो भी हमारा लॉस होता है. और जैसे पावर है वो कैसे हम लोगों को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है. So that is the result of Iliadic war. Lots of chaos, endless deaths and destructions. So now finally, when we talk about Hector, who is Hector? Yeah, elder prince of Trojan, son of Priam. That's great. ऐसे अगर आप लोग याद करोगे, so you'll be able to connect it more. Okay, so he's the son of Priam. He's the eldest prince of Troy. We have talked about it already. And then he personally, देखो उसे खुद को पसंद नहीं था जब वो लोग ग्रीक से वापस आ रहे थे बेसिकली. तो हेक्टर को जब पता लगा कि हेलन हमारे साथ है और हेलन तो कोई नहीं वहां की, तो हेक्टर ने बोला कि चलो वापस चलते हैं. जब देवर इन द मिड्स ऑफ द सी, तो उन्होंने बोला कि चलो बोट को वापस मोड़ लो, शिप को वापस मोड़ लो और हम हेलन को वापस रिस्टोर कराते हैं, अभी भी कोई देर नहीं है. बट पेरिस को तो फिर नहीं लगता है कि नहीं 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 हम नहीं ये वापस कर सकते. तो फिर वो अपने घर जाते हैं और प्राइम के पास उन्हें समझ में आता है कि अब मुझे फाइट करना पड़ेगा. हाँ, देखो कई बार हमारे साथ लाइफ में चीजें होती हैं कि हमें पसंद नहीं होता बट हमें करना होता है. बेसिकली व्हेन यू कनेक्टेड विद योर करियर. ओके, जोक्स अपार्ट. सो देखो, ही वॉज नॉट इन द सपोर्ट ऑफ हिज ब्रदर कि ये काम जो है बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे हेलन को नहीं लेके आना चाहिए. बट
अब उसको सेक्रीफाइस करना था, अब सारी चीजें साइड पे रख के फाइट करनी थी, एंड इट वाज द ओनली थिंग हेक्टर हैड. ही हैड अ चॉइसलेस चॉइस. ओके, मतलब वो चाहता था, ही वाज अ फैमिली मैन, ही वांटेड टू लिव विद हिज फैमिली, बट कुछ भी हो उसे फाइट तो करना ही था, क्योंकि अगर वो फाइट नहीं करता तो उसकी बेइज्जती हो जाती. इवन विल सी द कोटेशंस ऑन हाउ ही फील कावर्ड, कि अगर मैं कैसे वो अपनी वाइफ से बोलते हैं एंड्रू मैकी से कि अगर मैं लड़ूंगा नहीं तो कैसे मुझे सब लोग डरपोक और कावर्ड बोलेंगे. ओके, सो पर्सनली वो जो है डिसअप्रूव करते हैं. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, directly question comes from the character of Hector. So these are the points you can note, or you can make your short notes. Whatever is comfortable to you, you can make it accordingly. But आपको main characters के बारे में पता होना चाहिए. Hector जो है कौन है, कहाँ से आते हैं, कौन सी सिटी में है, क्या उनकी टाइटलमेंट है, क्या उनकी की कैरेक्टराइजेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली. So he's a family man and he casts aside his anger. देखो जब हम इसको वैसे तो we are going to have a comparison with Achilles, but when we talk about Hector, उनको एंगर था. ओके, उन्हें भी गुस्सा आता था, बट उन्होंने अपने एंगर को साइड पे रखा कि मुझे अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए फाइट करना पड़ेगा. he is more mature when we compare him to Achilles. Yeah, so he's a man who wants to live a peaceful life with his wife and son. So he's a lone defense of Troy. This is the point you can quote in your answers. If a question is coming from Hector, you can quote it. He is lone defense of Troy because वो अकेले जो है strongly fight कर रहे थे. Now is the time of discussing the important quotations. Okay, in your short answer questions, you can directly get quotations like this. Even in your previous year questions, you can see that is nothing beside your agony. When some brazen argive hails you off in tears, wrenching away your day of light and freedom, then far off in the land of Argus you must live, laboring at a loom at another woman's beck and call, fetching water at some spring, Mrs. or Hyperia resisting all the way. So this is the dialogue. These are the lines of the poem, basically, not a dialogue, spoken by Hector's side. Okay, so Hector बोलते हैं, किसे बोलते हैं, अपनी वाइफ एंड्रोमैकी को और अपने सन सिंटेक्स को, कि जब वो उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मत जाओ, मत लड़ो, तो ही बेसिकली सेज कि ये सिर्फ तुम्हारी एक छोटी सी एगनी है, तुम्हारा पेन है. ठीक है, जब तुम मतलब मेरे जाने के बाद या जो भी होगा रिजल्ट का वॉर, उसके बाद तुम जियोगी, यूल हेल. ओके, तुम कुछ ना कुछ कर रही होगी. तो हेक्टर जो है उसे पहले ही समझ आ जाता है कि नाउ इज द एंड टाइम बिकॉज एक्लीज इज गोइंग टू फाइंड. सो ही फोरसीज, बेसिकली उसे पहले ही दिख जाता है जो टेरिबल हॉरर आने वाला है उसके वाइफ और सन पे, और जब वो हार जाएगा तो उसके वाइफ और सन के साथ क्या होगा. सो बट अपार्ट देन दैट, जब हम किसी चीज से डर जाते हैं और हम उससे हट जाते हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट अप टू मार्क. ओके, हमें अपने डर से और फाइट करना चाहिए. सो हेक्टर ने डिसाइड किया कि चाहे रिजल्ट का वॉर कुछ भी हो, चाहे मेरी डेथ हो या एक्लीज की डेथ हो, चाहे हम लोग जीते या वो लोग जीते, फाइट तो मैं करूंगा ही, चाहे इससे एगनी आए, इससे कुछ भी आए. सो ही डिसाइड्स टू पार्टिसिपेट इन द वॉर. Okay, now next is you, Hector. You are my father now, my noble mother, a brother too, and you are my husband, young and warm and strong. Pity me, please. These are the lines in the poem that showcases the pain of Andromache. Basically, जिसको लगता है कि नहीं, मतलब उसका जो background है Andromache का, that is already the same. उसके brothers, उसके fathers, they have been in so much of wars and fighting, and she understands the loss of pain of loss. Okay, so when we talk about Andromache, she requested कि तुम ही हो अब सब कुछ. Basically, how this is how the Indian typical wife say, if typical wife says to their husbands कि अब तो तुम ही हो जो भी हो, अब तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मेरे पे थोड़ा सा तरस खा लो, थोड़ा सा. So he, in the book 6 we see this line when Andromache and the son of Hector plead him that please not to take part in the war and let's live a happy life here. But Hector denies. He says कि नहीं, अगर मैं fight नहीं करूंगा तो I'll be more than a coward, so I cannot do so for you. Sorry. Now, when we move on to the next section, that is a little complex to understand. Let us
basic, but there are points where you can argue कि ये qualities तो हेक्टर में भी है, Achilles में है, तो फिर hero कौन है? Although we have talked about it, the Achilles is the hero of the Iliad. So see, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, जब हम वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वॉर जो है एक्िलीज के लिए एक सेंस ऑफ प्रिजर्वमेंट है, जहां से वो डिग्निटी और प्राइड को रिस्टोर कर सकता है बेसिकली। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट हेक्टर, उसके लिए वो नेसेसरी इविल है, वो इविल है, उसे लड़ना पड़ेगा, ही हैड नो चॉइस। ओके, बट when we talk about Achilles, Achilles के पास choice है. When we talk about Achilles, then further on the basis of key characteristics, so he is self-controlled. Okay, so self-controlled है, उसको अपने से ही मतलब है. Okay, और वो inhumanly things करता है. जब आप देखते हो कि पैट्रोक्लस की डेथ के बाद वो कैसे beastly, mercilessly, endless murders करता है और मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है, किसी को नहीं देखता और किसी को नहीं बख्शता. बट जब हम हेक्टर की बात करते हैं तो ही इज मोर अल्ट्रुइस्टिक, उसे मतलब भगवान वाले, वाओ, वीर वाले, सेंट्स वाले एक्शंस करना बहुत पसंद है और वो ह्यूमन अप्रोच को समझता है बेसिकली। देखो, वी आल्सो कैन कनेक्टेड विद द एनेक्डोट्स ऑफ द एंड्रोमेकी एंड सन्स रिक्वेस्ट, कि उसे समझ में आता है कि वो उसका लॉस होगा और जब वो लड़ाई करता है तभी भी उसे समझ में आता है। सो इज मोर ह्यूमनिस्टिक एज कंपेयर टू Achilles. Okay, so Hector is loyal towards his friend only. Okay, he's not loyal towards his countrymen, और उसको कोई देवता नहीं बनना है. He is not that ideal कि जो अगर सोसाइटी ने नॉर्म्स बनानी है तो मैं उसे फॉलो करूंगा. सॉरी, he is not among them. He is among them कि जब मेरी ईगो हर्ट होगी, मेरा प्राइड खत्म होगा, तब मैं उसको रिस्टोर करने के लिए लड़ूंगा. मुझे बुरा लगेगा तो मैं लड़ूंगा. बट मैंने सी इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेक्टर. हेक्टर इज मोर लाइक लोयल टुवर्ड्स हिज पीपल, जिन जिन से वो कनेक्टेड है उनके साथ वो लोयल है और उनके लिए वो काम भी करता है, और इसीलिए वो फिर एज कोने में कर दिया जाता है. इसी पॉइंट की वजह से उसको कोने में कर दिया जाए कि you are now out of being the hero of Iliad. Now, when we talk about Achilles, he's the actual hero of Iliad. Why? Because he has so many characteristics. देखो, एक तो हीरोइक तो है ही है, लड़ना तो उसे आता ही है, ठीक है. He is very famous. Everybody knows that. Even Agamemnon को भी पता है कि अगर ये नहीं लड़ेगा तो we are going to lose. Now, when we see, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी तरस भी है. He understands. Okay, उसके लिए कोई वॉर जो है वो कंट्रीमैन के लिए नहीं है, उसके पर्सनल वैल्यू के लिए, पर्सनल प्राइड के लिए. दैट इज व्हाट आर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट हेक्टर, हेक्टर के लिए वो नेसेसरी इविल है, उसे लड़ना ही है, नहीं लड़ेगा तो कावर्ड कहलाएगा, इसलिए वो लड़ता है, अब चाहे उसका नुकसान हो या फायदा हो. बट हेक्टर हेक्टर चूजेस, जो होगा वही उसे चूज करना पड़ेगा. बट एक्चुअली इसके पास चॉइस है. ओके, then Achilles is full of anger and rage, but when we talk about Hector is more calm, more mature. He can overcome his honest feeling, and that is what we see in the case of जब उसका brother Paris जो है हेलेन को भगा कर ले आता है, abduction कर लेता है, तो तब हम देखते हैं. Okay, now Achilles जो है, he doesn't fear from the god से उसको कोई डर नहीं लगता है. ओके, वो सिर्फ gods को यूज करता है जब उसको चाहिए होता है, जरूरत होता है. we see it कि जब उसको उसकी ईगो हर्ट हो जाती है एक्चुअली की, सो ही रिक्वेस्ट पैलेस को बोलता है, अपनी मदर को बोलता है, थेटिस को, कि कुछ भी करो, इन्हें ग्रीक का सफाया करो. ओके, बट when we see it in the context of Hector, he is a just man. He is very, very equal with everyone. Okay, और उसे भगवानों से डर लगता है. Even when we see this quote, you can quote it in your answers. I would be ashamed to pour a glistening cup of Zeus, uses the god. Okay, और कौन सी साइड थे? ट्रोजन सिटी के साथ थे. Okay, with unwashed hands, I'm splattered with the blood and filth. How could I pray to the Lord of storm and lightning? कि मेरे हाथ ऑलरेडी खून से गंदे हैं, मैं कैसे ये कर सकता हूँ. ओके, सो हेक्टर के लाइन्स हैं ये, these are lines from book 6. ओके, सो he respects God, but Achilles doesn't respect. ओके, वो सिर्फ अपने लिए यूज करता है कि ठीक है, अब मेरी इको हर्ट होगी, अब मैं मदर को बोलता हूँ इन लोगों को प्लग डाल दो, ये मार दो, इन्हें ये कर दो. ओके, सो he uses God basically, but Hector respects God. Okay, so when we talk about, for example, yeah, we can see Thetis for when he appealed to Thetis for Agamemnon's wrongdoing कि अब इन Greeks को जो है हराओ, इनको मत जीतने दो. Okay, but he
Hector respects them. Okay, Hector. Now we see one more important part. It also comes in your answer. Hector, you are you more than all, and all for me. Okay, so he whore that I am, and this blind mad Paris. Okay, so these are the lines spoken by Helen in book 6. कि वो बोलती है कि अब तुम हमारे लिए फाइट कर रहे हो, तुम ही सब कुछ हो और मैं इतनी बुरी हूँ. Whore is basically a word that she uses for herself. ओके, वो बोलती है कि मैं इतनी गलत हूँ और मैं होर हूँ और ये ब्लाइंड मैड पेरिस है, लेकिन तुम जो हो यू आर मोर देन ऑल. ओके, तुम सब कुछ हो और सब कुछ. ओके, सो शी अंडरस्टैंड कि कैसे जो है हेक्टर उसके लिए सेल्फलेस, और जो ब्लाइंड मैड पेरिस है उसको दिखाई नहीं दे रहा चीजें, और वो कैसे जो है हेक्टर उसके लिए और पेरिस के लिए और उनकी कंट्री ट्रोजन के लिए सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं. ओके, so now, when we talk about Achilles, we know he's anger. Even Achilles तो anger भी हो जाता है, उन्हें उसे भगवान से गुस्सा भी आ जाता है कई बार. Okay, so he challenges the god, he angers और वो resent करता है. Basically, this is a dialogue कि मुझे मतलब बहुत छोटी लाइफ मिली है अर्थ पे. Basically, Hector, Achilles की death Hector के brother Paris करते हैं. Paris को पता चल जाता है कि इसके जो है फुट पे पॉइंट करने से इसकी डेथ हो जाएगी. सो ही पॉइंट ऑन हिज knees and he dies. Okay, so उनके फुट पे वो जो है एरो मारते हैं और एक्यूलीज की डेथ हो जाती है. देखो वैसे दिस इज द आयरनी कि जो पेरिस है वो ही वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्गेस्ट बट ही अंडरस्टूड कि कहाँ पे निशाना मारना है और कैसे काम बनेगा. ओके, सो दिस इज द कोट. बेसिकली जब एक्यूलीज नाराज होते हैं गोड से, डूम टू द shortest life on earth. Now when we move ahead and we talk about quotes. Okay, these are other quotes. देखो, this quote we have already discussed, rage वाला. You can always mention it in the answer of theme. अगर आपका large answer और medium answer में question आ रहा है, so you can always mention this quote. So quote करके you can explain कहाँ पर Homer ने use किया है. These are beginning lines and this explains the very thematic concern, that is the rage. Okay, and you can use it in the context of Achilles. And when we talk about this quote, these lines, sorry, all this weight on my mind too, dear woman. I would die of shame to face the men of Troy and the Trojan women trailing their long robes. If I would shrink from battle now, a coward. Okay, तो हेक्टर बोलते हैं बुक 6 में. these are the lines to Hector's reflection. जब मतलब हेक्टर की वाइफ जो एंड्रोमेकी है उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज मत जाओ, थोड़ा तरस खाओ उनके सन के साथ, तो वो बोलते हैं मत जाओ. बट हेक्टर बोलता है कि नहीं, तुम्हारे लिए छोटा सा पेन है लेकिन मेरे माइंड पे भी ये बहुत ज्यादा वेट है. ओके, और ये जो है मुझे क्या कर रहा है, बहुत अफेक्ट करेगा. अगर मैं फाइट नहीं करने जाऊंगा तो एक्चुअली क्या होगा, हम ग्लोरीफाई नहीं होंगे. तो ही क्लैरिफाइज कि ग्लोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जाना बहुत जरूरी है, फाइट करना बहुत जरूरी है, रिजल्ट कुछ भी हो. although he foresees the result कि अब वो नहीं बचने वाले हैं. Okay, so he says कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो I'll be coward, which is a, तो बोलते हैं ये तो लड़ाई नहीं, ये तो डरपोक है, टट्टू है, and they say words like that. So he understood कि अगर वो नहीं जाएगा तो वहाँ की women, Trojan women and men जो हैं उसको respect नहीं करेंगे, and he'll be called a coward अगर he gives up and he does not fight. So now let's move ahead. See, this is the theme of respect for the dead. Okay, Hector, stop. Unforgivable you. Don't talk to me of pacts. There are no binding oaths between men and lions. Wolves and lambs can enjoy no meeting of the mind. They are all bent on hating each other to the death. So, with you and me, no love between us, no truce till one or the other falls and gluts with blood. Ares, who had set men behind his row-held sheet. Okay, so now in the book 22 you can see कि कैसे Achilles जो है वो कोई तरस नहीं खाते हेक्टर पे और बोलते हैं कि बस 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 कर, अब पैक्स की बात मत कर मेरे से, ठीक है. अब तो हमारा जो लाइन, ही यूजेस सिमिली बेसिकली. ओके, लाइक द वूल्स एंड द लैम्स. ओके, तो यहाँ पर एपिक सिमिली यूज की गई है कि कोई माइंड मीटिंग नहीं होता दुश्मन और दो दुश्मनों के बीच में कोई माइंड मीटिंग नहीं होता, कोई सुलझाता नहीं होता है. अब सिर्फ फाइट होगी, या तो तू मरेगा या मैं मरूंगा. ओके, एंड वो बोलता है कि हमारे बीच में अब कोई भी जो है सुलझावट नहीं होगी, अब सिर्फ फाइट होगी. either you are going to die or I am going to die. ओके, और जब तक इस मिट्टी पे, इस धरती पे हमारा खून नहीं बह जाता एक का या द अदर,
तब तक मजा नहीं आएगा. So he says कि अब तो सिर्फ फाइट करो, अब मेरे से फैक्ट्स की बात मत करो. You can always quote this in theme as well as Achilles का compassion for fight. Okay. Then when we move ahead with heroic attributes, तो जो कार्ल डे लैमे हैं वो क्या बताते हैं कि जो है ऑनर होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर डेड होनी चाहिए, बैटल ऑफ ब्रेवरी होनी चाहिए, डिवोशन फॉर द किंग होना चाहिए, ओपिनियन वर्सेस एटर्नल ग्लोरी होनी चाहिए, और शॉर्ट लाइफ वर्सेस नो एटर्नल ग्लोरी एंड अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ होना चाहिए. तो ये तो काल के अकॉर्डिंग है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट होमरिक एट्रीब्यूट्स, सो वी गेट टू नो कि ऑनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोरी, डिग्निटी, प्राइड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हीरोइक एट्रीब्यूट ऑफ होमरिक वर्ल्ड. सो होमर के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हीरोइक एट्रीब्यूट क्या है? ग्लोरी, डिग्निटी, प्राइड. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से जब हेक्टर बोलता है कि ऑल दिस वेट ऑन माई माइंड टू, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कोट ऑलरेडी. तो हेक्टर को जो है ग्लोरी दिखाते हैं वो कि doesn't matter what is the result, what is going to happen after the war, either I'm going to die or live, but fight तो करनी पड़ेगी. Glory is very important. Okay, so he doesn't want to be a coward, therefore he fights. Okay, but Achilles, when we talk about, he fights for his own reason. He has his rage towards Hector. Okay, now see, these are the lines spoken by Achilles. Okay, this can also come in your short answer question. Two-face bear me on the day of death. If I hold out here and I lay siege to Troy, my journey home is gone, but my glory never dies. तो वो बोलता है कि आज के दिन दो फेट्स मेरी डे ऑफ डेथ पे मुझे मीट कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे रहूंगा और क्या करूंगा, फाइट करूंगा, सो माई जर्नी होम इज गोन. ओके, अगर मैं यहाँ से सीज कर दूंगा बेसिकली. ओके, यहाँ फाइट नहीं करूंगा, उसको उसकी मदर थेटिस जो है दो चॉइसेस देती है कि या तो तू फाइट कर ले, ओके, और जल्दी मर जा, या फिर तू हमारे साथ रहे और फाइट से मना कर दे, अपनी ग्लोरी से मना कर दे, और अपनी फैमिली के साथ जो है लंबी लाइफ जी. बट व्हाट ही चूजेस टू फाइट. ओके, बिकॉज उसके लिए ग्लोरी बहुत इंपॉर्टेंट. सो यू कैन सी इट इन द लाइन, माई जर्नी होम इज गोन but my glory never dies. कि glory नहीं जाएगी, and that is the important attribute of Homeric world. Glory बहुत important है. So Hector से भी आप देखते हैं और Achilles से भी देखते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ अपनी मदर थेटिस को बोलता है कि मैं ऑप्शन नंबर 1 ही चूज करूंगा, मैं फाइट करूंगा अपनी ग्लोरी के लिए. डजंट मैटर मेरी शॉर्ट लाइफ है या कुछ भी है. ओके, if I voyage back to my fatherland I love, to the fatherland I love, my pride, my glory dies. Okay, कि अगर मैं आप लोगों के साथ रहूंगा और फाइट में नहीं पार्टिसिपेट करूंगा तो मेरी ग्लोरी डाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. ओके, ट्रू, बट द लाइफ दैट्स लेफ्ट मी विल बी लॉन्ग. ओके, कि अगर मैं आप लोगों के साथ रहूंगा तो वो थोड़ा लंबा होगा. Okay, the stroke of death will not come on me quickly. Okay, so through these lines you understand कि Achilles जो है वो चॉइस 2 को चूज करते हैं कि मैं फाइट करूंगा, मतलब मैं सिर्फ फाइट करूंगा. ओके, मैं फाइट ना करूंगा तो मेरी ग्लोरी मर जाएगी, और मैं आप लोगों के साथ वो उस चीज को हटा देता है कि मैं आप लोगों के साथ लंबी हैप्पी लाइफ ना चूज करके आई चूज टू फाइट, ताकि मैं अपनी ग्लोरी को रीस्टोर कर सकूं. ओके, सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि देखो फैमिली को छोड़ के दोनों ही, इवन हेक्टर को भी पता है अगर हेक्टर चाहता तो वो बोल सकता था कि जाओ भाड़ में जाओ सब लोग, मैं तो अपनी फैमिली है, मेरे पास अपनी वाइफ है, एक सन है, उसके साथ मैं जी सकता हूँ. बट उसने होमरिक वर्ल्ड के एट्रीब्यूट्स दिखाए कि देखो आई विल हैव टू फाइट. That is the only choice I have. Okay, and similarly happened with Achilles. Achilles की मदर थेटिस ने बोला कि हमारे साथ लंबी लाइफ जी लो, अपने फादरलैंड पे जी लो, आओ आके पहले से हमारे साथ रहो, उन्हें अच्छी लंबी लाइफ जीनी. बट उसने बोला कि नहीं मदर, ऑनर, ग्लोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी ग्लोरी मर जाएगी अगर मैं फाइट नहीं करूंगा. ओके, सो कावर्ड डाइज इक्वल्स टू डिसऑनर फॉर हेक्टर एज वेल. ओके, so देखो these are the attributes of Homeric world. Okay, what are these attributes? Honor. Honor is one of the important thing. Honor होना is something that has to be here. Okay, that is personal honor versus country honor. Hector के केस में आप देख सकते हैं कि वो country honor है, वो अपने people के लिए honor को restore करता है, but Achilles के लिए वो personal honor है. Okay, glory, personal versus country's glory. Okay, Hector का example you can understand कि Hector जो है वो किसके लिए लड़ता है, वो फैमिली कंट्री के लिए लड़ता है. लेकिन जो हमारे Achilles हैं, the hero of the Iliad, he fights for his own personal rage and fights for his own personal reasons. Okay, battle and acts of bravery, then you understand opinion versus eternal glory, and then you understand the respect for the dead. These are the points we have already discussed, so we'll not go in depth now.
And this is all we sum up here. So what are the important things from this units are, it is very important. Okay, homeric attributes are very important for you. See, homeric attributes according to Cardi also you can write. Okay, and you can make diagrams like this, you can understand, you can quote it in your answers. Okay, homeric attributes of Homer worlds, heroic attributes of Homeric worlds, and then you can understand these quotes are very important for you. And then the character of Achilles is very important, and all the quotes that we have discussed basically is very up to the mark, and you have to understand it all. So I hope it is clear to you. Unit second is making sense to you. So if you have any doubts and questions, please let me know in the comment box. So I'll see you in the next unit. Thank you.